Kanika. How are you? Fine, sir. Good. So, Kanika, you are from Kaithal, Haryana, and PSIR is your optional, is it? Yes. Yes. And you are from Lady Shri Ram College for Women, very prestigious college. Huh? Yes. Good. So, Lady Shri Ram College, why it is named so? Lady Shri Ram College was established by Sir Shri Ram, and he named it after his wife. So, lady, he added the word lady on the first set of Lady Irwin and Lady Harding College. And it was a dedication to his wife and to the women he wanted to get educated. And Okay, good enough. So, what was the name of his wife, by the way? his wife's name was Srimati Phulan Devi. Yeah, Srimati Phulan Devi. In which year it was established? This Lady Shri Ram College for Women? Sorry, sir, I may not be Anyway, able to. 1956, not very important. Okay. So you are from Haryana. Haryana is doing much better in sports as compared to other states. So which are the reasons for that? Sir, yes. So I'll list a few reasons. First is the cultural reason. The culture has been sports oriented from the beginning in Haryana. Second, the infrastructural focus that has been upped by the government, and the government has ensured that infrastructure is developed in such a manner that supports sports persons. Thirdly, the incentives that have been provided both to the sports persons as well as to the coaches therein. And it started, say, in 1980s that the Haryana government started recruiting sports persons, the sport coaches, and providing incentive to them. That has ensured. And fourthly, a dedicated Haryana sport policy in place, and the government working on it consistently. Can you name some sportswomen who have made us proud during past, say, about 3 to 4 years? Yes, sir. PV Sindhu, then Sakshi Malik, recently Meera Channu, who got us a medal in weightlifting. So, and then Mary Kom in boxing, and Vinesh Fogart's sister Geeta Fogart, Babita Fogart, and then the second. But then we have in table tennis, we have Miss Batra, who is there, and she's making us proud and getting medals. Good. And from your state, 16 years old girl, Manu Bekar, what for? From Jhajjar. Yes, sir. It's an honor. She is from my college itself. Oh, and I see. I was not. Okay. Mm-hmm. From yes, Jhajjar. Okay. Yes. So she what has, for? She made a history. 16 years old girl. so she is into shooting and all. She does that. Shooting, pistol. Okay, Yes. good enough. And what about Shefali Verma from Rohtak? So I'm not aware of Shefali Verma. Sorry for that, sir. I'd like to read about her. Famous cricketer, youngest cricketer to play in a women's T20 international match for India. Thank you for Youngest cricketer for India, male or female, to secure international half century. She has broken the record of Sachin Tendulkar, which he had at 16 plus, and Shefali Verma at 15 plus. Okay. Anyway, let's come to another thing. Pranayama, you do, huh? Yes. Okay. So, practicing pranayama. Which type of pranayama you practice? I practice a normal pranayama. They are a part of my daily routine. So 3 to 4 pranayamas I start with. I start with Kapalabhati, then I move to Anulom Vilom, then I do Utthit using and then I move to the simple pranayama, that is a breath meditation and all. Okay, what is this journal writing? You send your articles for publication in journal? What exactly that means? It's not related to the publication journal, but it's a medium of a personal journal writing, keeping a personal journal where I write my thoughts of the day or sometime an important event, and I reflect back on that.
Okay, PSIR. Yes, So in winter session of the parliament, Jan Vishwas Bill was introduced in the parliament. So what exactly is there in Jan Vishwas Bill? sorry, sir, I'm not able to recall the provisions of the bill. Can you recall if I tell you decriminalization of minor offenses? Decriminalization of minor offenses. Can you recall now? Sir, it may be related. I'm not able to Okay, correctly okay, you are not recall. Okay. Private member bill was also introduced in the last session. That was the winter session of the parliament, not budget session, winter session of the parliament. So can you tell me about the private member bill which was introduced in the parliament? So What I'm was not that? aware of the proceedings of the winter session of the parliament. Okay. Amendments in the constitution from 101 to 105. Are you very well aware of these amendments in the constitution? Yes, sir, but With which you are very much aware, from 101 to 105? so we have in 101 was just a second, sir. 101 was regarding GST. Then Are you very well aware of GST? Should I ask you related with GST only? you may, sir, but Okay. then Or any other constitutional amendment with which you are very much familiar. You can select any. I'm okay with any of them, GST or EWS reservation or extension of Okay, GST. related to GST, why at all there was the need of having constitutional amendment for that, for introduction of GST? So GST was so constitutional amendment was required because before that the taxes were separated between the center and the state, and to ensure that there is a single tax mechanism under the name of good and services tax, which was center and state both are going to collect and divide between themselves. So that is the reason that a constitutional amendment was required. In how many articles amendments were made through this particular constitutional amendment? In which articles? And can you recall some? Yes, sir. Article 269 and Article 279 were amended. Related. Okay, these were related with what? These Which were was related related with the GST Council. So I'm not able to correctly. Anyway, total number of articles were 5. You can go through that, no problem. Okay, women empowerment. Yes, sir. So various steps have been taken for empowerment of women. These are in the form of centrally sponsored schemes. These are in the form of legislations. So now you tell me related with centrally sponsored schemes, and then come to legislation. Legislations made by the parliament. One scheme, another one legislation. Schemes for women empowerment are one-stop centers for women. And then second, ensuring proper nutrition under the Sabla scheme and having them under the Anganwadi center. Thirdly, the scheme for women entrepreneurship program and providing them incentives, also interest subventions, so as they can start their startup and all. Fourthly, I think women are incentivized in land property. So a registry is much more cheaper if a woman is getting it, and if it is in the name of a woman. That also promotes more land being transferred, so more land being registered in the name of that had not been the case earlier. Fifthly, for the scheme, then there is also sorry, sir, I'm not able to recall most. Okay, come to legislation now. The legislations. The legislation starts from the amendment that was made to the Hindu Succession Act, ensuring that the women can also have a say in the patrimonial property. Secondly, the dowry prohibition bill. Then we got a Domestic Violence Act in 2005. Bill नहीं अब तो act बोलिए ना, अब act बोलिए ना. Instead of saying bills, now you say act, है ना, pass हो गया ना. Okay, go ahead. Yeah, please.
And then the amendment that was made to the Constitution, 73rd and 74th Amendment Act, that increased the local self-government, that established, that institutionalized or constitutionalized the PRI institution, and a 33% reservation was provided to women as well. And then the POSH Act, or Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act of 2013, is an important landmark for women empowerment. Okay, good enough. Can you say that we are moving ahead from women empowerment to women-led development? There is a limited success, yes, but we need to ensure that we move towards from women empowerment to a women-led development. Is it? Sorry, sir, just a second, I'll silence myself. Would you call it a limited success when president is a woman and women are holding more than 1/3 constitutional posts? Can that be called partial success? Yes, sir. So these First citizen of the country is a woman, and yes, you sir. are holding 1/3 constitutional posts. How 1/3 can you say? Including the PRI posts and then the women in the administration and all. If we collectivize them, so they are holding. No. Yes, sir. You have already mentioned the constitutional amendment. Grassroots level posts, those are constitutional posts. So more than 1/3 you are holding constitutional posts. Yes. More than 1/3, lakhs and lakhs. Panch and Sarpanch, these are the constitutional posts. So would you call it limited success? When a woman is preparing a budget and going to another woman for getting approval, it is, and more than 1/3 constitutional posts are with women. Constitutional posts in lakhs and lakhs. Anyway, so now related with the IR, international relations. Yes. Okay. So SCO summit, SCO presidency is with our country. Yes. What is the theme this year? SCO. Sorry, sir, I'm not aware of that. Otherwise, SCO stands for the theme is for a secure SCO. This is the theme. Anyway, SCO stands for Shanghai Cooperation Organization. Sir. Okay, how many countries? And one more country is going to enter. So how many countries by now, till now? Just a second, sir. So before that, Central Asian countries plus China plus Russia. There were Now, how many countries in all? 9 and 10. So I'm not able to get eight. With the entry of Iran, it goes up to. Number will be 9. Yeah. So yes, 8 we can say at present. Yes, sir. Can you name some? Yes, sir. It is China, Russia. Then we have the Central Asian countries, Kyrgyzstan, then Kazakhstan. Then we have. Then I am unable to. Uzbekistan, is it a part or not? I'm unable to connect there. So and extended invitation to Pakistan related with SCO, and if at all, then what is the response of Pakistan related with that? So I'm not aware of the response of the Pakistan related to our invitation. Otherwise, we have, you know that we have extended invitation to Pakistan. Yes, sir. I was aware of that. Okay, Bhutan. So Bhutan and China are going to talk each other related with border disputes. Yes, so at how many places border dispute is there between China and Bhutan, and how it is going to affect us? It affects us because the dispute is also related to the Shumbi Valley. Then it is in the northern sector, the Zarlum region, and then China also has some claim in the eastern sector, which also matches the plains in Assam also. So
there as well. But major effect is on the Chumi Valley region, where it is a sort of a triangular region which connects India, Bhutan, and China. And this Doklam? also into the Siliguri strategic corridor, which is our chicken neck to the northeastern country, sorry, state. Doklam? Yes, sir, the Doklam sector as well. Okay, in Maldives, elections are going to be held sometimes in the month of September 2023. So why India is concerned related with that Maldives election? India is concerned because the present government led by Mohammed Solih has been in favor of India and has extended a very good hand. And prior to there was Mohammed Yassin who had been in favor of China, and there was a stalling of project, and he had been leading anti-India movement in Maldives for a long time. So that is a concern. So was it a good idea to aid Turkey when this earthquake occurred? I think it was an extremely good idea to launch Operation DOST to aid Turkey when the earthquake happened, and it installed the image of India as the first responder, not only for the South Asian region, but for the wider Indo-Pacific and then the world itself, and further strengthen our idea of a Vasudhaiva Kutumbakam. Very good. Ajay Banga, have you heard Yes, this sir. name? So who is Yes, Ajay Banga? Mr. Ajay Banga, Mr. He was the chairman of Mastercard, CEO of Mastercard, and now he has been appointed. Yeah, Mastercard, chief of Mastercard. Okay, and now The chairman of World Bank. So he an Indian American? Yes, he is an Indian American, and he is going to lead. So it is the first time. It is for the first time that a person of Indian origin is going to lead the Bretton Woods organization. And what about Asian American? Which time? So I'm not aware of that. Second Asian American and first Indian American. Where from he was graduated and post-graduated? About Honorable Ajay Banga, I'm not aware about that exactly, but okay, he was born and brought up in Pune, and he is an alumnus of IIM Ahmedabad. Thank you for it. Okay, good enough. So your interview is over. Now you tell me, how do you rate yourself with today's comments? So I'm a little weaker in the factual part, and that somehow, so I was not aware about the theme of the SEO summit. And before that, I also fumbled on the winter session of the parliament. So I think as a student of polity and international relation, I should be aware about these parts. Also, a little structuring is required the way I answer the question. Okay, so how do you rate? Good, very good, outstanding? I'll rate it as an average. Not average at all, and not even good. Somewhere around very good. Around very good. Eh? But definitely not average and not good. Okay, it was better than that. Okay, so I would like to suggest you to go through your DEF. Yes, sir. So identify the probable questions from your DEF and from current affairs and prepare them well. When is your interview? It's the 19th of April, sir. 19th of April. It means a little less than 2 months. So that's a very good thing. अब इसमें आपको बहुत अच्छे से और मेहनत करनी है और वेरी गुड ही नहीं होना है. क्या होना है? क्या होना है? आउटस्टैंडिंग जाना है. एक्सलेंट आउटस्टैंडिंग है ना, वो होना है. वो हो सकते हो. यू आर ए वेरी गुड कैंडिडेट और टाइम आपके फेवर में है. So no excuse. Yes, sir. No 1 year, only 2 months. Yes, sir. Choice is yours कि 2 महीने में पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा या फिर 1 साल. Yes, sir. Obviously 2 महीना है ना. Yes. प्रीलिम भी ना देना पड़े तो बहुत अच्छा है. ठीक है ना. Yes. तो अब आप उसके लिए कर सकते हो. यू आर ए पोटेंशियल कैंडिडेट. ठीक है. अब वहीं पे हम आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम योर डेफ स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेम. Yes, sir.
कोई भी हो, जो भी आपने कीवर्ड्स इससे आइडेंटिफाई करिए और उनसे प्रोबेबल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए। जी सर। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए। आपका इंडियन फॉरेन सर्विस किस किस प्लेस पे है? सर आई थिंक थर्ड या फोर्थ पे, आई थिंक थर्ड पे है। थर्ड ओके, तो करंट अफेयर से रिलेटेड तो आप ऐसा करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पे जाएंगे और पे। यस। वहां पे उनकी साइट पे नेबरहुड से रिलेटेड अपने रिलेशंस और मेन कंट्री से रिलेटेड जो रिसेंट विजिट फॉरेन डिग्निटरीज के हमारे यहाँ हुए हैं हमारे कंट्री में, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो जा रहे हैं बाहर। हो सकता है जब तक आपका इंटरव्यू हो तब तक वो यूएस भी जाएं, यस उम्मीद है। सर। और जो भी विजिट हों उनसे रिलेटेड, और हमारा ये जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं ट्रेड रिलेटेड, यस। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यस सर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक हमारे जो 2-3 साल में हुए हैं उनमें 2 तो फुल्ली मेटेरियलाइज हो गए हैं, ऑपरेशनल हो गए हैं। यस सर। ठीक है, उनके बारे में। और जो भी आपके टाइम तक तो 13 से हमारा बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा। यस सर। आप संसद टीवी जरूर देखेंगे, अभी देखिए चाहे मत देखिए कोई इशू नहीं खास, लेकिन यस कब सर। से आपको देखना है? 13 अप्रैल से। मार्च से, जब से बजट सेशन हमारा शुरू होता है। यस सर। आप एक योजना जरूर पढ़ेंगी पिछले 2 महीने की, और जब तक आपके इंटरव्यू ना हो जाए तब तक योजना, यस सर। उसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट बहुत अच्छे से दिया होता है। जी सर। और पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है उसको आप अच्छे से उस टाइम से और सुनेंगी, और पिछले जो हाल में हुआ है उनको भी आप अच्छे से देखेंगी। यस सर। बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का बहुत अच्छा एनालिसिस आपकी योजना में दिया होता है। श्योर सर, आई विल गो थ्रू द अगर आप एक न्यूज़पेपर इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं पढ़ रही हैं, पढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा। यस उसमें सर। से मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिंट। लाइक में। मिंट इसलिए कि आप अगर सारा न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ेंगी तो उनके ब्रॉड ब्रॉड जो हेडिंग्स हैं, यस सर। बोल्ड लेटर्स में जो हैं, ब्लॉक में जो हैं, उन्हें आप अच्छे से देख लें तो भी काम चल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अब गुड पॉइंट्स आपके विच शुड बी कंटिन्यूड इन यूपीएससी इंटरव्यू ऑल्सो। आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो आपको इसका वो मिलेगा, वीडियो मिलेगा, कोई इशू नहीं। तो अभी हम बात कर रहे थे रिलेटेड विद व्हाट कैसे ये, बेटर पॉइंट्स दैट वर देयर। हाँ बेटर पॉइंट्स। एक तो ये है कि ऑनेस्टी यस कैसे सर। रिफ्लेक्ट होती है ऑनेस्टी? I think when you don't fumble and when the crystal clear answer, also the thoughts are in line. हाँ, तो ऑनेस्टी इस चीज से रिफ्लेक्ट होती है कि आप जानती हैं तो ठीक है, नहीं जानती तो आप कहती हैं कि आई डोंट नो, रादर देन मेकिंग कैसेस। Yes. प्रीलिम में क्या होता है? 1/3 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। मेन में क्या होता है? एट द मेन में मोस्ट, हो जाते हैं। एट द मोस्ट जीरो। Yes sir. तो माइनस नहीं मिलेगा ना, Yes sir. लेकिन यहाँ पे काफी माइनस मिलेगा, Yes. क्योंकि उससे ऑनेस्टी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा कि ब्लफ कर रही हैं आप, Yes sir. आपको Integrity नहीं में। आता है, आप फिर भी बोल रही हैं। Yes. तो आज आपने नहीं बोला ऐसा, लेकिन Yes. दिस शुड बी कंटिन्यूड Sure. इन यूपीएससी इंटरव्यू। Yes. हाँ भी रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस, कभी कभी क्या होता है कि जब नहीं ठीक से जवाब आता है Yes तो sir. नर्वस हो जाते हैं कैंडिडेट। तो नर्वस नहीं होना है, 1 2 3 आंसर नहीं दोगी क्वेश्चंस के आंसर, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ह्यूमन ट्रेट्स जो हैं उसमें को ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करोगी, जो कि एक सिविल सर्वेंट को चाहिए, तो उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है? Yes sir. अच्छा, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्कुल ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। Thank you sir. बॉडी लैंग्वेज वो भी ठीक है। कहीं पे भी आप बहुत ज्यादा, कभी कभी लोग ये
कभी कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको प्रोवोक करने के लिए हो, तो उसमें डोंट गेट प्रोवोक्ड। No, sir. ठीक है। कभी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं, उन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को बड़े सही तरीके से हैंडल करना है। Yes, sir. गवर्नमेंट को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है, आपने किया भी नहीं है। Yes, sir. अगर आपकी ओपिनियन पूछें तो आप उसको किस तरीके से देंगे अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हो? सर, गवर्नमेंट माइट हैव डन आफ्टर गिविंग सम थॉट टू इट, बट एज फार एज माय लिमिटेड नॉलेज इज कंसर्न, इट वुड हैव बीन बेटर हैड इट बीन लाइक दैट। ठीक है, as far as my limited knowledge is concerned, but Yes. government might have taken that particular step keeping something others in view which perhaps I'm not aware with. Yes, sir. So नहीं है, मतलब Yes. कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें काफी आपको ये होगा कि मैं गवर्नमेंट की साइड लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। Yes, तो sir. आप ये तो शब्द इस्तेमाल करेंगे जो मैं कह रहा हूं, Yes, sir. और उसके साथ साथ but whatever limited knowledge I have, Yes. it Yes. would have been better had it been like that. Yes. But definitely, sir, government might have taken this particular step, keeping something in view which perhaps I'm not aware of. ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे गवर्नमेंट एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोविड में आपने क्या किया, जो लोग हंग्री थे उनको उससे बचाने के लिए क्या किया? हमने उनको 5 kg एडिशनल फूड ग्रेन दे दिया, Yes, sir. क्योंकि उनके पास जॉब नहीं था। इन्हें अपना खाद्य जो भी हमारी चल रही थी, हम योजना कौन सी चल रही थी, एक्ट जो है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, Yes, sir. उसी में ही क्या ऐड कर दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसमें क्या दे दिया, 5 kg एडिशनल फूड ग्रेन। Yes. ठीक है, दे दिया। Yes. Yes, sir. लेकिन विद कॉस्ट था, किस कॉस्ट पे था? जो कॉस्ट ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर होती है, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, जानते होंगे आप, राइस, Yes. व्हीट एंड कोर्स ग्रेन। Post green and also अभी Chana क्या was किया, also. अभी क्या किया कि वो रोल बैक कर ली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्या किया उसकी जगह पे, क्या किया उसकी जगह पे? उसकी जगह पे फ्री फूड ग्रेन्स अप टू द एंड ऑफ 2023। ठीक है, एक साइड हो गई। दूसरी साइड में क्या किया, मनरेगा के आउटलेज इन प्रेजेंट बजट, दीज आर 8 times low, Yes, sir. and these are even 33% lower than the revised estimate of last Yes. year. Yes, sir. अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि ये बताइए whether it is right, whether at all it should be treated as welfare measure or it should be treated as freebies. Because during COVID pandemic, it was okay that people lost their job and our duty was to save them from hunger, that they do not die from hunger. So at Yes, that sir. time, whatever steps were taken related with Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, and additional food grains of 5 kg were provided to them. That was a welfare measures. Yes, So sir. should it not be said as freebies, giving them free food grains up to the end of 2023, then COVID is over? ये क्वेश्चन हो सकता है। On one side, we are reducing the outlay for Manrega, and that too, that much reduction, 33% less than revised estimate of last year, and that too 8 years low this year. Yes, sir. आपकी So, ओपिनियन पूछ सकते हैं, आप अब yes, sir. उसमें क्या जवाब देंगे कि सर no doubt the outlays have been reduced, but the amount, that Yes, particular sir. amount has been added to ये Okay. क्या कहते हैं, पीएमजे हो गया, आयुष्मान भारत, पीएमजे, पीएम And जन also, ना, उसमें ज्यादा आउटले कर दिए, इधर कम कर दिए। And sir, government has done due to this reason that those outlays have been diverted there, and there might be some other aspects also which I am not able to recall or which I am not very well aware of. Government might have done that, keeping view some other things into view. But as far as my limited knowledge is concerned, yes, it would have been better had the outlays under Manrega been increased instead of giving free food grain to the people when pandemic is almost over. So we should realize the potential of the people
and give them employment so that they can take the food grains under that National Food Security Act rather than getting free food grains. But sir, this again you can say this is my limited knowledge. Government might have done it keeping other things into account which perhaps I am not aware of. ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं हुई, आपने अपनी बात भी कह दी और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है ना, फैक्ट्स फिगर्स के साथ है? क्योंकि अब तो पेंडेमिक ओवर हो गया भाई, ओवर हो गया। अब हमें उनका पोटेंशियल को रियलाइज करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और वो अपना उससे अर्न करें और 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया रेट पे जो होता है उससे अपना गेहूं चावल और ये कोर्स ग्रेन खरीदे। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को इस तरीके से डील करना है। एनी अदर थिंग व्हिच यू वांट टू नो? So the women empowerment question, so you asked. हाँ, वीमेन एम्पावरमेंट। अब मैं आपको, आपने काफी कुछ अच्छा बताया, अब आप सुन लीजिए, ये आपके रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप उसमें से बता सकते हैं, है ना। इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी स्कीम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना, मैटरनिटी लीव 26 वीक्स फ्रॉम 12 वीक से 26 वीक्स हो गया, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया जिसमें लोन दिया जाता है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसमें लोन दिया जाता है वीमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, कीपिंग लेडीज फर्स्ट, कुछ स्कीम है जो कि दोनों के लिए हैं, लेडीज के लिए भी हैं, मेन के लिए भी हैं, लेकिन उनमें से प्रायोरिटी वुमेन को देनी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, legislation 33% reservation to the women, abrogation of article 35A, enactment of triple talaq act, but the name of the act is not triple talaq, it is the Muslim Women Right to Protection on Marriage Act. अच्छा, विशाखा guidelines, prevention of sexual harassment at workplace, permanent commission to women in army, and women in STEM. You know STEM? Yes, sir. Science and technology, engineering and mathematics. Women are leading. How? President. How? Finance minister. Yes, sir. Other ministers in the cabinet. How? 14% women in the parliament, Lok Sabha. Sir. Leading role in army, 108 women are to be promoted from the rank of lieutenant colonel to colonel. Leading role. Holding 1/3 constitutional post, more than 1/3 constitutional post, top to bottom. ये मत कहना नहीं लिमिटेड सक्सेस है, ये है वो है, ये है। क्वेश्चन क्या है? Whether at all we can say that women are moving ahead from women empowerment to women-led development. So this shows women-led development. Grassroots level की 1/3 constitutional post, 1/3 से ज्यादा, not 1/3, 1/3 मिनिमम है, किसी किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है, 50% भी है। हरियाणा है कितना है? 50 कितना ज्यादा है। Anyway, तो इस तरीके से आपको बोलना है। स्पोर्ट्स वीमेन who have made us proud. मैरी कॉम का आपने काफी सारे सही बताए उसमें और बड़ा जल्दी आपने बता दिए। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सेना नेहवाल, हिमा दास, साक्षी मलिक, फोगाट सिस्टर्स, मैथिली राज, मनिका बत्रा, ड्यूटी चंद, मानू बेकर and Shefali Verma and so many others. So they have made us proud during past few years. Okay? Yes, sir. तो इस तरीके से आंसर्स अगर होंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेल। अभी आपके पास टाइम है, प्रोबेबल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करिए, उनको अच्छे से करिए। गुड ट्रेड्स जो आज आपने शो किए हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए और कभी भी वो नहीं होना है कि नर्वस नहीं होना है। Yes, sir. कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी ये इसका सिलेबस है, पर्सनालिटी टेस्ट का सिलेबस वैसे नहीं है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, Yes, sir. पॉलिटिकल साइंस वैसा सिलेबस नहीं है। सिलेबस आप जानते ही हो क्या सिलेबस है,
आपके जो ट्रेड्स जो चाहिए गुड सिविल सर्वेंट होने के लिए, वो ट्रेड्स आप में हैं कि नहीं, ये देखा जाना है, न कि आपकी नॉलेज देखी जानी है। ठीक है ना, बिकॉज नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड। और कहीं पे आंसर में ये अगर रिफ्लेक्ट होता है योर कंपेशनेट नेचर बिहेवियर, उस टाइप से अगर शो होता है तो और भी बढ़िया। और लीडरशिप क्वालिटी कहीं पे अगर आती है, कम्युनिकेट तो आप अच्छे से करते ही हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहीं पे आप एग्जांपल कोई बता सकें अगर पूछा जाए तो, कन्विक्शन, स्ट्रांग ओपिनियन होनी चाहिए, फर्म स्टैंड होना चाहिए विदाउट बीइंग आर्गुमेंटेटिव। यस सर। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। कोई अगर पूछने लगे कि हाँ गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है, तो आप भी खिलाफ बोलने लग जाएं और उसको अपने आर्ग्यूमेंट्स देने लगे, नॉट लाइक दैट। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, इंटेलिजेंस झलकनी चाहिए, ऑनेस्टी तो है ही। ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सारी चीज तो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती हैं, कहीं पे हो सकता है कोई एनालिसिस करने का कोई पूछा ही ना जाए, कोई क्वेश्चन एनालिटिकल पावर जिससे हो, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब वो मैंने आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो मैंने बताया, एग्जाम्पल भी तो दिया। हो सकता है उस टाइप का भी पूछ ले, अब वो तो कुछ पता नहीं चलता। जो क्वेश्चन हमने पूछे हो सकता है इनमें से एक भी ना पूछें। और कभी कभी ऐसा होता है सारे ही क्वेश्चन PSIR से पूछने लग जाए, कभी कभी ऐसा होता है सारे ही क्वेश्चन स्टेट से पूछने लग जाए, सारे ही क्वेश्चन वीमेन एम्पावरमेंट से हों, कुछ भी हो सकता है। तो आपको हर किसी चीज के लिए तैयार रहना है। कुछ और पूछना चाहिए पूछिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट यूटिलाइजेशन। 1 साल नहीं सर, 2 महीने। यस सर। 2 महीने ना, यस। हाँ तो 2 महीने 1 साल नहीं, इतना भी पढ़ना है। 2 महीने सर। ओके बाय।